Hello everyone. Through this video, we'll learn how to install TurboC IDE into our machine. इस वीडियो के जरिए हम लोग जान पाएंगे कि TurboC IDE को कैसे इंस्टॉल करना है एंड C++ बेसिक प्रोग्राम्स पे कैसे काम करना है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. हाँ, अभी तक सब लोगों ने TurboC IDE जो ग्रुप पे शेयर किया हुआ लिंक वो डाउनलोड तो किया होगा एंड वहां पे आपके मशीन में DOSBOX ये फाइल आया होगा एज वेल एज TurboC 3.2 ये zip फाइल भी आया होगा. आपको पहले इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है इनटू वन ऑफ द डायरेक्टरी. प्लीज ऑब्जर्व. वंस यू एक्सट्रैक्ट दिस, you can run this setup so that this TurboC3 can be installed into your machine. It has already been installed in my machine, तो मैं ये सेटअप अभी रन नहीं कर रहा हूँ. जब आप ये एज वेल एज डॉसबॉक्स को इंस्टॉल करोगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर TurboC++ का ये आइकॉन आएगा और डॉसबॉक्स का दिस आइकॉन यू विल बी एबल टू सी ऑन योर डेस्कटॉप. देयर आर टू वेज. हम लोग डॉसबॉक्स के थ्रू भी TurboC में जा सकते हैं या इस आइकॉन पे डबल क्लिक करके भी हम लोग TurboC में जा सकते हैं. लेट मी शो यू बोथ द वेज. First, the simplest way is if you double click on this, it will show you this screen जहां पे आप करोगे start turbo C++. तो इस आइकॉन के थ्रू भी वो डॉसबॉक्स के थ्रू ही आपको TurboC में लेके जा रहा है. एंड दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ Turbo IDE. So let me show you the another way also. If some of you would like to go through DOSBox into the TurboC, so आप पहले DOSBox को ओपन करोगे, राइट. ये अगर आपको मिनिमाइज स्क्रीन में दिख रहा है तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए यू नीड टू यूज द की कॉम्बिनेशन एज अल्टर एंटर, राइट. इन द बिगिनिंग इट गिव्स यू Z कोलन, पर आपका TurboC जो है वो अभी C ड्राइव पे इंस्टॉल है. So you need to mount first C drive. कैसे करते हैं? Please observe. Mount C. So यहाँ पे आ रहा है drive C is mounted. So you need to move to drive C and फिर आप करोगे change directory to TurboC3. Then you will be going in bin and यहाँ पे अगर आप TC टाइप करते हो as a TurboC command, it will again take you into the same window. These are the two different ways to reach to this IDE का initial screen. Now इस स्क्रीन के ऊपर आपको ये सारे मेनूज दिख रहे हैं. फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडोज एंड हेल्प. हर मेनू के नेम में फर्स्ट कैरेक्टर इज इंडिकेटेड विथ रेड कलर. अगर आपको वो मेनू ओपन करना है तो यू नीड टू प्रेस. You can go on doing it with the help of mouse also, ऐसे. But I always feel like the best way to deal with this IDE is through the keyboard, right? So keyboard के through अगर आपको कोई मेनू ओपन करना है तो you need to press the combination of Alt key plus the red character that is shown in the menu. For example, file मेनू में जाना है तो F is indicated with the red color. So Alter F से you can open the file menu. Alter S you can open the search menu. Alter C compile menu. Alter P project menu. Alter O option menu. Like that. Alter H help menu. ऐसे आप इन different menus को open करके then arrow keys से you can move around different menu items. Please observe like this, right? Okay. So now let us see like how we can go on writing our first program. So I'll be opening the file menu जिसके अंदर new. By default ये IDE आपको देगा एक फाइल created which is having the name as noname00.cpp. आप इसको रीनेम कर सकते हो. Let us write a simple code of printing. Success is always on console. So what I'll do is I'll include two files. First is stdio.h
Next, I'll go on including conio.h and then void main. इसके अंदर I'll be using two function. One is clear the screen. Next function print successes always. And one more function we'll use get ch. Right. Now, as a programmer, according to one Newman architecture, I must save my program as, let us say like, हम लोग यहाँ पे फिर प्रोग्राम सेव कर रहे हैं bin के अंदर a.c नाम से, right? And in this case, please observe that now your file is saved with a.c. Whenever you make any changes, you have to save your file with file menu में save, या you can go on pressing F2 as a key to save the programs. Please see here, F2 is for saving the code, short key, and F3 is for opening the code. Once you save the code, now the next phase comes as what? You need to compile your code so that it can get converted into the object file. So compile menu में Alt F9 से भी आप compile कर सकते हो, या you can press Alt C compile menu and directly this option compile. Please observe, compiling box comes and it says that there are no warnings and no error at this phase. Now, if you have some errors and warnings, it will be indicated over here, right? Okay. And if I want to run the code, I need to go in run menu. आप कंट्रोल F9 से भी आपके कोड को रन कर सकते हो. सो कंट्रोल F9 या रन मेनू में जाके रन ऑप्शन, प्लीज ऑब्जर्व. And when I run the code, my screen is clear. Printf की वजह से successes always is printed and now it's waiting for a key to be pressed because of get ch. जैसे भी मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो it will come out of the console and it gets inside the TurboC again. Right. This is the basic idea about how to run your code through TurboC. Now, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे देखने वाला इज अल्टर एस से आप जा सकते हो हेल्प में एंड यू कैन नेविगेट थ्रू इंडेक्स. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का हेल्प देखने जा रहे हैं तो you could be able to see the entire help of printf, right? So that is the best option provided by TurboC as I feel. हाँ, नाउ ये कोडिंग स्क्रीन जो आपको ब्लू में दिख रहा है, अगर आपको इसको फुल स्क्रीन करना है तो यू नीड टू गो ऑन प्रेसिंग F5 इज द की. प्लीज ऑब्जर्व, F5 से ये जूम होगा, राइट? ओके, this way. I'm pressing F5, it gets zoomed. Again F5, it comes to the original position. If you want to close this, for closing any of this window, you can use Alt F3 combination. Please observe. And then if I want to open it again, open, and यहाँ पे I'll go on opening my code a.c. and my code is open again. I hope this is clear how to use it. Now please write one program, simple code like this, compile it, run it. And to come out of this environment, we need to go on saying quit. अगर आपने DOSBox के थ्रू इसको ओपन किया है तो ये आपको वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके आएगा जहां पे आपको प्रेस करना है exit as a command and then you will be exited out of the DOSBox. I hope this gives you the better understanding of how to install and use Turbo IDE for working at least for simple C and C++ program. Thank you very much for watching. Thanks a lot.